चलो जी बैठो जी, आप देख लेना क्या करना। ऑन है ना? क्लॉक चल रही है ना? और ठीक है, फिर अब क्या रह गया यार। देखा? नमस्कार जी। What a lovely time together in Toronto. So do we need to do this session in English or Hindi? हिंदी करना है जी। हाँ, हिंदी भी अच्छा है क्योंकि हिंदी में आपको, मैंने इंग्लिश में सुना, हिंदी में आपका फ्लो वेरी नाइस, लाइक आई मीन यू नो। आएगा, करेंगे तो आएगा ना, करते ही नहीं। हाँ, नहीं चलो जी, क्वेश्चन आंसर सेशन है आज हमारा, और सब मिले हैं तो आज देखते हैं इतने टाइम बाद गपशप के लिए दोबारा 1 साल बाद। जिसके पास जैसा जो कोई क्वेश्चन हो दागो। जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, शायद हाँ मैंने आपसे पूछा भी था पर मेरे को उस टाइम क्लियर नहीं हो पाया था कि हाँ। मैंने बताया ना, मेरा पता नहीं, मैं तो बहुत यंग हूँ पर मैंने आज से 4 साल पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ मंगलवार का ना। मेरा काम बनता ही, सारे काम बिगड़ते हैं ना जो आज तक बिगड़े हैं जितने काम, मतलब जितने मेरे, मतलब वैसे बहुत अच्छा ही रहा है हमेशा लाइफ मेरी, ओवरऑल 100% रही है, तो थोड़ी बहुत हिलता है ना तो मंगलवार को ही होता है वो। मैंने आपसे पूछा था, आप कह रहे कि नहीं आपका माइंड है ये, तो फिर मैंने उसके बाद मैंने चेंज किया माइंड कि नहीं यार ऐसा नहीं सोचना। तो उसके बाद मैंने वही नोटिस किया कि यार वो दोबारा कंटिन्यू हो रहा है, फिर मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा कि मेरा माइंड है या सच में है, ये क्या है। आपने जो इस एक्सीडेंट भी हुआ कुछ भी हो तो मंगलवार सारे जो काम है कोई आपने पहले तो ये सोच लिया किसी अनकॉन्शियसली किसी टाइम के, चलो मंगलवार को मेरा टाइम गड़बड़ होता, मैंने नोटिस किया। उसके बाद आपने इसकी गांठ बांध ली और पक्का कर लिया यार मंगलवार तो गड़बड़ होता ही है। मैं काम पे भी नहीं जाता। हाँ, तो वो कमांड बन गई। अब कॉस्मोस जैसे ही मंगलवार लाती है ऑटोमेटिकली वो अट्यून करती है आपकी पुरानी कमांड से, और कि भाई क्या करना है, मंगलवार का शेड्यूल क्या है यार। ओ, बंदे को तकलीफ देनी है आज, तो मंगलवार को तकलीफ दे देते हैं। जैसे किसी ने मेरे पास आते हैं, लाइव केसेस हैं, किसी ने बोला कि अब तो लगता है यार हमारी शादी बुढ़ापे में ही होगी, यंग एज में। तो जब वो 15 साल बीत गए और फिर वो तड़प गया कि शादी नहीं हो रही, तो तब क्लासेस में आने के बाद उसे याद आया कि मैं यही गाना गाता था, भैया बुढ़े होंगे तो शादी होगी। तो वो बुढ़े ही होते चले गए, शादी ही नहीं हुई। तो वो कमांड थी, फिर उसे जब कमांड तोड़ना सिखाया तो शादी भी हो गई। तो आपने क्या किया है कि उससे लड़ना शुरू कर दिया है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं सोचना। नहीं डालते ही वो डबल कॉपीज हो गई। अब तो अगला मंगलवार और कबाड़ा होगा। अब आपने मात्र उसको ऑब्जर्व करना है कि यस मंगलवार आ रहा है, देखते हैं, काफी है, खत्म हो गया, फिनिश, कुछ नहीं करना। और जो फोटोन आपने बम्बार्ड किए हैं एक वाइट स्क्रीन पे, वो पार्टिकल के तौर पे गए हैं। अगर आपने क्वांटम जीनो इफेक्ट क्लास देखी है तो पार्टिकल की तरह बम्बार्ड होकर गए और उन्होंने मंगलवार ईयरमार्क कर दिया है। अब आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिव कमांड, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव कमांड। जो भी बम्बार्ड हुआ है वहां वो वापिस आएगा। फोटोन भी वापस आता है, प्रोटॉन भी वापस आता है, दे इट विल कम बैक एंड एस्केप फ्रॉम अनदर प्लेस। आपको ट्रेनिंग करनी है तो इसके लिए ट्रेन करो, लेफ्ट हैंड से एबीसीडी लिखना शुरू करो, ठीक है? और लेफ्ट हैंड से, राइट हैंडर हो ना आप, लेफ्ट हैंड से लिखो मंगलवार ट्यूसडे, मंगलवार ट्यूसडे, बस इतना लिखो, खत्म। बॉडी का कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीनों माइंड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सारा नर्वस सिस्टम उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो मंगलवार लेफ्ट हैंड से लिखो, कर सको तो नोट गिनो, 1 2 3 4 5 6, और गिनते रहो, उंगली से काउंटिंग भूलो। माइंड ट्रेंड करो, बॉडी और माइंड अलग अलग चलें, उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5। नाउ स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स। माइंड प्रेशर डालेगा कि 7 8 9 10 11 जैसे यूज्ड टू है, और जैसे ही आप कुछ और सोचना शुरू करोगे अपने आप भूल जाएगा, बॉडी चलती रहेगी, तो वो टूट जाएगा। वो जो रिदम बना हुआ है ना मंगलवार का, वो टूट जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं यार ये मैं फिर घर जाऊंगा, बीवी लड़ेगी यार। वो लड़ती है, वाकई लड़ती है। वो कहते हैं फिर आ गया मोया, बाहर से पी के आया होगा, वो फिर पी के आता है। ये कमांड्स है हमारी, ये हमने सेट कर रखी हैं यार। जब भी मैंने किसी प्यार में पड़ना है ना, साले धोखा ही देते हैं सारे, वो धोखा ही मिलेगा। उसको ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व के ये फीलिंग है, इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, ओनली ऑब्जर्व एंड फिनिश। अगर आपने ये कर लिया वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब मुन्ना क्या करेगा, माइंड क्या करेगा कि आपके 2 मंगलवार बढ़िया बिता देगा और फिर आपको खुशी देगा, वाह मजा आ गया यार, सेट हो गया, उसी टाइम क्रैक हो जाएगा। अगला मंगलवार फिर गड़बड़ जाएगा। आप कहोगे बाबा जी के टीले पे गए थे, प्रसाद चढ़ाया, हस्बैंड लड़ता नहीं, दारू भी पी के नहीं आया 2 बार से, अगले हफ्ते फिर पी के आएगा। उसकी खुशी नहीं मनानी। हाउ टू कनेक्ट
हाउ टू क्रिएट फ्यूचर क्लास है, उसमें है उम्मीद, तसल्ली, बताना और खुशी। ये 4 काम मत करो। हाँ, ऑटोमेटिकली मुन्ना ब्लॉक हो जाएगा। माइंड के रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, ये एक लूप चलता है गोल, वो लूप टूट जाएगा। लोग तड़प रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा, लोग तड़प रहे हैं, सही घर नहीं मिल रहा, परेशान है लोग, बच्चा पास ही नहीं हो रहा, मेरा वीज़ा ही नहीं आ रहा, मेरा पीआर नहीं लग रहा, परेशान है। उसको ऑब्जर्व करके छोड़ दो। बहुत हैवी क्लास है क्वांटम जीनो इफेक्ट। अगर देखो और समझो तो आपको ये पार्टिकल फिजिक्स समझ आएगा। अगर ये आता है समझ तो नेक्स्ट देखो द गॉड पार्टिकल। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। किसी को हौसला देना। आप मान लेते हैं एक जंगल में हैं और जंगल में अचानक से शेर की आवाज़ आती है गरजने की। अब आप ढूंढते हो एक गुफा, भाग जाओ यहाँ से, पेड़ पे चढ़ जाओ, कुछ करो कुछ करो। अब आपकी आंखें ढूंढ रही हैं कहाँ है शेर, कहाँ है, नहीं है, आवाज़ कान नहीं सुनाई दे रहा। आप कहते हो यार साई ऑफ रिलीफ, तसल्ली हो गई यार, चलो बढ़िया हो गया, अब शेर गया। आप नीचे उतर के आ जाते हो, शेर प्रकट हो जाता है। जिंदगी में मुसीबत ऐसे प्रकट होती है। आप कह रहे हो गाड़ी बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, 10 घंटे से बढ़िया ही चल रही है, अब क्या, अब तो चलती रहेगी, एक्सीडेंट। इसके लिए क्लास है ऊर्जा का गार्ड। आपकी ध्यान ऊर्जा आपने हटा दी, कभी नहीं हटानी। जिस चीज की प्रॉब्लम के लिए आपने यहां से सिर्फ एक अलर्टनेस डाल रखी है, वो खराबी कभी होगी नहीं लाइफ में। इट्स ऑल माइंड गेम। लोग परेशान है इसमें सबसे ज्यादा, तो मोटे बहुत हो रहे हैं यार, पतले नहीं हो रहे यार, वेट लॉस नहीं हो रहा यार। तो सबसे पहले तो वो लड़े जा रहे हैं, वेट लॉस चाहिए, वेट लॉस नहीं हो रहा, मोटा नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, और हो रहे हैं। डाइटिंग करते हैं, 15 दिन बाद खाना खाया फिर मोटे हो गए, कहते हैं अब तो एक रोटी खा रहे हैं, अब क्या करें, क्यों हो रहे हैं। ये कॉस्मोस है। हमारी जिंदगी एनर्जी पे चलती है, किसी और फिजिकल हैपनिंग पर नहीं। कॉस्मोस ऑटोमेटिकली आपको फिर मोटा कर देता है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हाँ यार मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं यार, ये मुन्ना फिर सुचवाएगा, खोपड़ी फिर वहीं जाएगी, ठीक है यार छोड़ो। बट ऑलवेज कीप अ वॉच, कीप अ गार्ड, शेर आ सकता है। हाँ, मोटे हो सकते हैं, खत्म। मोटे नहीं होना है, मोटे होने से खराबी है, पतले हो जाना है, नो एफर्मेशन, नो नेगेटिविटी, सिर्फ ऑब्जर्व कि यार हाँ मोटे हो सकते हैं, चलो देखते हैं, देखा जाएगा। वो वहीं ब्लॉक हो जाएगी एनर्जी। What 4 things? उम्मीद, तसल्ली, बताना, खुशी। You do not have to tell anybody whatever is happening with you. You do not have to celebrate or party about it. You don't have to feel sigh of relief. You have to be on guard all the time, and you don't have to expect. No expectations, no sigh of relief, no happiness celebration. You can be happy, don't celebrate. There are people who celebrate in a way that they gather 10 people all around, and then they are not in the party, but they are doing the party. You getting the point? You got the point? Yep. Many times you might have had a girlfriend who you did not love actually, but you showed that you loved. Okay? You got the point now? Good. Demo, right example. Okay? You be in a party but don't have to celebrate from within. Once you celebrate, you go into gamma waves. Okay? The gamma waves kill you. Hyper excitement, hyper tension, hyper stress, hyper worry, hyper fear, they are all gamma waves. And gamma is outside the brain. Can you explain the difference between pre-living and visualization? Pre-living or visualization. There's a difference between a pre-living and visualization. Pre-living means you are going beyond a happening. Visualization is you are visualizing it just here. You want to visualize a car. Okay? It is 10th of January and you are visualizing a car 11th, 12th, 13th, 15th. On 15th what you do, your mind takes the car and you go on a beach and you travel around, you tell your friends I have this car, you boast about it and it blocks. The cosmos from 10th to 15th has planned that okay, this is the car this guy wants and it is working on it. Now suddenly there is a new command after 15th that yes, he has to roam around in the car. So the chain reaction that was to create a car
gets a miscarriage. That is what you do when you pre-live. You go beyond. It has been studied by science in physics that yes, when you fire a gun of photons, they go on a base, they strike it, and strangely, which science doesn't have answer about it, strangely certain photons or electrons, they go beyond. There is a wave philosophy, there is a particle philosophy. Okay, it behaves like a particle and behave like a wave, but certain time it goes beyond. That is pre-living. So it cannot be manifested. No manifestation on this board. It goes beyond, lost. And once you observe, the photon comes back and again gets placed back. So how you have to cancel what you have pre-lived? You have to again think, oh, I pre-lived this. Okay. As soon as you do this, okay, the photon comes back and again it starts working. I'll give you an example. Let's say like, you talk about girlfriend, okay? So let's say like I start talking to a girl, just example, and then in my head, I think like, oh, I'm thinking, okay, if she was my girlfriend, I would feel like that's pre-living. No, you are again going wrong. You are thinking, you are giving a different command. She was my girlfriend, maybe she would be my, not a perfect command. Not a perfect command. You have to think, I want her to be my girlfriend. Finish. Just leave it at Don't let the mind enjoy, just live in that further than moment that, okay. and finish. If you have a car, if you really, in reality you have a car, you have a Tesla for example, what do you feel? You go, you enjoy Tesla, touch it and then you go and sleep at night and finish. Okay, you feel it's obvious there. Okay, this is visualization. You have to obviously be like that. But once you do not have Tesla in actual form, in the physical form, what the mind does, it won't let you sleep in the night. But the person who actually has a Tesla will sleep easily. You will force yourself, the mind will force, the Munna will force you to pre-live that Tesla even at night, and the command gets cancelled. In 9 months, we are all mummy made, we are not papa made. In 9 months of pregnancy, what the mother is doing in the womb? Cooking, making, baking, manufacturing us. And it has to be a slow process, it has to be a specific process for 9 months. You can't squeeze it, you can't prolong it, you can't pre-live, you can't do anything about it. It has to be constant. Constantly the baby is being made. Constantly you are with the Tesla or the house or your girlfriend, whatever. You are constantly with that. And in 9 months or maybe the time decided by the cosmos takes to manifest whatever your thoughts or dreams are. But 9 months even we take to take a birth, and then we take maybe 3 or 4 years further down the line to be little bit self-independent. The human child is the weakest, it needs care. All animal species, the child gets birth, immediately gets upon his feet and can eat also, take milk. We have to be nursed. So anything that cosmos will manifest will take time, cannot pre-live. The child cannot be born and immediately starts running. It is a process. Don't pre-live, don't go beyond. Basically, don't put emotions. Yep, that is what Krishna told Arjun. Don't pre-live. See, Krishna was a tricky person. That is why he is a god. He made such circumstances that all Kauravas should pre-live in the mind that they have killed them, Pandavas. So Duryodhan, Shakuni and all of them, Dhritarashtra, they all pre-lived actually that yes, Arjun will die tomorrow, Dhritarashtra will, Yudhishthir will die tomorrow, Bhishma Pitama will kill him, Karna will do that, and they were happy and joyous. And then it practically never happened. And he stopped, freezed the thoughts of all Pandavas to think that they will be killed, when they might be killed, how they will be killed, no question, finish, block, just follow, come. That was Krishna. That is the philosophy of pre-living and manifestation. He blocked their thoughts. They could not pre-live. Nobody in the Pandavas knew when and how they will kill their enemy. Nobody knew, because Krishna never let them think. He blocked. The Gita is stop, block, finish, do it now, be in now. जो already जो rockets छोड़े हुए हैं हमने desires के commands,
how to I have watched you there how to change the past and you know how to change your past and something change the future something that Past and future I have commands. watched it twice but some parts I'm still confused. I don't know. I mean, how to change the past and क्या change the future Create a future create while a you're in the future. Yes, present. yes. हाँ, और जो they already are very knowledge heavy. छोड़े हुए हमने desire like I mean commands उनको how do we वो कैसे जो कमांड्स दे दी हैं और आज हो रहा है वो हमारे ही पापों की सजा है। अब उसके लिए रोना नहीं है, वो अपना टेन्योर पूरा करके फिनिश हो जाएगा। जैसे ही वो यूं आया है ना तो ये यूं फिनिश होगा, बट हमने यहाँ पहुंचने पर उसका हल्ला मचाना शुरू कर दिया, हाय ये क्यों है, हाय ये क्यों है, ये ना हो, वो बढ़ जाएगा। मैंने ये सोचा मैंने क्यों सोचा नहीं नहीं, अब सोचना है कि मैंने ये सोचा, चल तेरा टेन्योर जब खत्म होगा तब होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हर हालत में यही बच्चे को माँ क्या कहती है, इसको भुला दो। वो गिरा, उसको चोट लगी, खून भी निकल गया, तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, मम्मी कहती है कौवा आ गया, तोता आ गया, देखो 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 देखो, कहता ध्यान ध्यान ऊर्जा कहीं और चली गई, वो उसको फल नहीं मिला। जो इंजेक्शन लगा उसको पानी नहीं दिया उसने। ध्यान ऊर्जा इज लाइक वाटरिंग द प्लांट, वो वहां पानी देना बंद कर दो। जो हो रहा है आपके साथ उसको पानी देना बंद करो। कर्स करना, ब्लेम करना, रोना पिटना, यू हैव टू स्टॉप इट ऑल। वो टेन्योर पूरा करके ठीक हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इफ यू हैव अ वायरल फीवर इट विल टेक 5 days, यू टेक एंटीबायोटिक्स, यू विल बी ओके। ओके, if during the third day you start cribbing, cursing, crying and keep shouting what the hell, you will be strangely surprised that antibiotic which healed you for first 2 or 3 days no more working for you. You go to the doctor, take a new antibiotic, after 10 days you strangely suddenly lose all hope. I don't know what will happen. As soon as you don't know, the cosmos finishes the tenure. So the 5 days turns into 15 days. So even third, fourth day, you don't have to feel anything. It is like, for example, I'll tell you, if I have, however we shouldn't tell, that is what I just taught 5 minutes back. But man lo, for example, if I get fever, I take antibiotic and let it be. I keep working. The antibiotic will work. It doesn't disturb me. I get okay. I keep working as well. I work with less power. I don't work to the optimum level I can, but yes, work continues. Life is okay. so how to go into the past and create the future वो Can you go to the moon now? Not with the body, obviously. Okay, but you can. Okay, you can go anywhere. You can be possibly available in the mind, anything in the cosmos, anywhere in the world, even the strangest of the things, your mind can go. Okay, fine. So now you gave a command, a negative command, someday, sometime in the past. Now you have to just think that you gave command sometime, whatever negative command, and that command is manifesting now. And suddenly when it got manifested, now I remember that yes, I thought something stupid. This also happens. Okay? Only then you realize that something negative was told by me or I spoke it out. So you have to now sit, you have to sit. You don't have to sit like this. It has to be open. You cannot sit like this because this is blocking your heart chakra, this is blocking the sacral chakra. Okay, so you have to be straight. You can put your palms upwards and just close your eyes and think. Sometime in the past, okay, that time around, it's okay. A vague time idea is okay, timeline is okay. I had thought negative about this. I had spoken negatively about someone. Maybe I blamed myself, or maybe I thought, okay, it's better to die rather than live, and now I'm feeling the curse of illness. So you have to think, okay, I'm thinking that time, okay, I'm thinking that I am thinking, I am viewing myself thinking about that episode. Okay, and now I inhale that command, sitting now, then I'm thinking then that yes, I am thinking, I'm looking at myself thinking, and I'm thinking also presently. So there are two thoughts. You have to visualize yourself thinking that time, and you have to inhale. I take this command deep inside me now, and I throw it off to the cosmos. Now the good part about it is, if you can visualize black color in it, that there is a black energy coming in, and you have to, it is a very powerful exercise, and then you have to visualize it going, inhaling from your nostrils and going to your stomach, and then the stomach, कोई नहीं, कर लो आप इसको,
and you create a black ball in the stomach. All that negative energy coming and there is a black ball. Now you don't have, mind will immediately do what? It will throw that black color in the body. You will get more sick. You have to be very careful. You have to learn to stabilize the mind. You take that ball, and once you start exhaling, that black ball is climbing up, going out of your nostrils or the mouth, and then you throw it in the cosmos. Now the mind will again interfere in between, letting it go to the cosmos, deep, dark, endless space. So create a blue bag. Create a blue bag and push that black energy into that blue bag, tie a knot, and then you throw it in the cosmos. Blue is the color which gives you peace. So this is a very powerful exercise. People do what? They inhale, and that black color ultimately enters somewhere in the body. Munna, that is Shani, that is Tamas. Not very easy. If you have to heal someone, there are different colors. There is a purple color, there is yellow color, there is white color. Blue is the best. If you are confused, use for healing anybody the blue color universally. So heal yourself today. I have different question on this. Emotional dependency कैसे कम की जाए? How can we train our mind not to be dependent on for our happiness and to control our emotions and fear and everything just to be with yourself? You have to understand the mind doesn't create control. You cannot control emotions with mind. Emotions and mental, there are two different bodies. There is a mental body and then there is an emotional body. The mental body makes you think endless things. You have never thought anything precisely and properly. You can emote. You can have emotions, but any and all thoughts are not in your control. Strangely, somewhere from outside, we are thinking certain things. We are singing songs in the mind. We are talking nonsense. Suddenly I am talking to you, the mind is lost, it's thinking something else. The thoughts are being bombarded from somewhere. You have to take this, and this actually happens. To understand this, you have to watch class Munna se setting kar lo. Okay? The thoughts come from somewhere, and it is a universal thing. Everybody experiences. Suddenly some thought is coming for no reason. We have done nothing about it. So these thoughts are the mental body. This is the upper area, the 3 chakras. They comprise the mental body, and all thoughts do not create emotions. There are only few thoughts which we specifically think about. As soon as we think, that thought, the mental body goes to the emotional body. The emotional body is this one, and then emotion, energy gets into motion. Emotion is energy in motion. You must have thought a lot of things in life. Going to an interview, suddenly butterflies in the stomach for no reason. Why? You feel pukish, you feel upset, you feel gastric. Why? The energy is moving here. The energy of fear, the energy of upsetness, anger, mental upsetness, aggression, greed, all of them will trouble your GIT tract. They will trouble because they are basically creating a negative energy, and that energy in motion is creating ultimately emotions. The emotional body is activated. As soon as the emotional body is activated, the feeling generates. You watch a movie, you like horror movies, so you will not have problem. You don't like horror movies, suddenly you see a horror scene and suddenly you say, oh my God, what was this? The stomach feels sinking, the heart feels it will stop, and suddenly the body perspires. There is perspiration in the body. So the feeling is generated. As soon as you start feeling that emotion, many times you don't even feel that emotions. It happens. You are very fond of some sweet dish, it comes in front of you, you can ignore it. The mental body doesn't create emotion. I don't want it. There can be a possibility that it creates a sweet stimuli in the brain, and you say, lovely, but I don't want to eat it. So you created the emotion, but you didn't feel it. You got the point? So we do it all the day, all the time. We have to learn to do it, train our body and mind in such a manner. That is called sadhu. The person who has done sadhana and has sadh liya. Sadhak means who is doing sadhana, and sadhu is jisne sadh liya. Okay, now I have something sweet in front of me, my tongue doesn't water, my mouth doesn't water. So as soon as you are able to understand the emotional aspect of the body,
whenever you create a negative emotion in the body, you want to replace it, compensate for it with a positive and pure emotion. So you suddenly become emotionally dependent on someone. Now you are hunting for someone. Self-love, no? Hmm? Self-love. Self love is very tough. Self-love, I think, reduces It's the always emotion. helps, but somewhere always down the line you become emotional to your husband, to your kids. Yeah. Like you always want to That share is, no, something. we don't become emotional. That's We want to compensate for the void created in the emotional body by taking emotions from someone else. It is a food, emotional food. So now this is why you feel like who to depend upon. So you go to your near dear ones. Yeah. Okay, and then you start wanting from them, okay, compensate me for that. So why do you have to create that void all the time? You work on that, there will be no emotional dependency. You have to work on emotional interdependency. Nowadays this is a pattern, and strangely enough this has come to all places on the world now, that girls must earn. And I get to see a lot of females, they want to get married and they are earning as well. Now they say, I want to earn. I tell them, earn your husband, he will earn money for you. But they don't understand. They say, no, I want to be independent, I want to be free. So once you want to be independent, you will be free, that is the mental body speaking. Then you don't need your husband. The interdependency, that he needs something from you and you need something from him, will create the bond. Practically speaking, husband and wife are the rose petals and a thorn in it. They cannot coexist. They are forced to coexist. You look at a rose flower, so soft, so beautiful, so fragrant. You go to touch it, immediately a thorn goes and brings the blood out of it. That is husband and wife. They are not entitled to live together, but they are forced to live together because of the body brain, because they have a separate, different entity, different body. That body needs fulfillment. That is why physical relation, physical existence, sex, all are coming into existence, and that is how we are born. Because the nature is bothered only to have recreation, only to have people, only to have the next of the species. It is least bothered what quality. This is what we have to think. So this emotional dependency, you have to have certain aspects of life that are not with you but with your husband. That will create interdependence. If you are also earning, he is also earning, you don't need each other for earning at least. If he can also cook, you can also cook, you further don't need each other. What do you need each other for? Just a social expectation, right, to get married. No, there is no social acceptance. People are living alone as well. It is the body brain. The body needs someone. It's like companionship, like you would have someone to share with or talk to. It's not about money. Yes, very beautifully said. This is the wrong notion, but that is rightfully said. People ultimately think, I need a companion. You should not talk to your husband more than 3 minutes. Then you and he are no more companions. You are grown up enough. You must have fallen in love. Now how do you fall in love? You fall in love with someone. You fall in love, for example, there are two people in love. What do? They just sit. They are lost with words. Till the time they don't speak, they can spend 4 hours. You start speaking and third minute passes by and then the brain takes you in the past or the future. You start planning. You kill most of your life and ambitions and the lovely moments of life that should be happening in the future. You make them pre-live and they die, and then you start fighting. And ultimately again the body, maybe the sex, maybe the physical attachment, the physical love again makes over. You again say, okay, we made up. But you cannot talk till the time you are quietly sitting with the Lord, with the Jesus, with your Allah, with your God, with Ram, with Krishna, whoever. You are having a fine talk. You can't talk. People are all the time begging. Husband and wife, after 3 or 4 minutes of talk, what can you talk? What is there to Yeah, talk? like 24/7 you're together. Then you are all the time begging. begging. Each other, husband and wife beg each other. This is called begging with, क्या बोलते हैं, हक क्या होता है अपना इंग्लिश में? Begging is my right. I rightfully demand this from you. This is ultimately begging. This is what we do with God also. That is why God also fights with us. Nature fights with us. We are fighting with God. You have to wait.
You have to be a calm child. So They, that's what I don't understand, that if we want to be dependent on somebody, let's say money, because your husband is earning or your wife is earning. In this generation, everybody is earning. It doesn't matter gender, right? So is it right to live alone? That makes more sense, or to have somebody, because you're not actually dependent right now to anyone. see, the point is, see, you are living in a female body. You understand what I'm saying this? Once I say this, you are living in the female body, okay? I am living in a male body. Someone is living in a pigeon's body. Someone living in a giraffe's body, okay? So this body is female and there is no doubt about it, okay? Now the energies that you have, I have, they are the same. The pigeon has, they are all the same. But due to the body, the dominating energy in your body is the feminine, not the masculine. Now, once you have ample amount of feminine energy, automatically that energy will attract the masculine energy from outside. Automatically it will attract. But what you do, you choose to become masculine as well. You learn to fight. You learn to bark. Yeah. You know dogs bark, bitches don't. You know this truth? This is the truth. The bitch, well, you actually have to observe this. The bitch does ka 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 ka. The dog does bhaw 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 bhaw. This is the truth. The lion, what does a lioness keep a lion for? Only for roaring. He doesn't do anything. The lioness doesn't. This is the truth. The male elephant shout, क्या कहते हैं, trumpet क्या होता है, आवाज करता है. He makes noise. The female elephant doesn't. That is masculine and feminine. The male rhino has a horn. The female rhino doesn't have. This is the truth. You look at the male sheep and the female sheep. You look at the cow and the ox. They have total different, that is masculine and feminine. Now being in the female body, you start behaving masculine. Your body gets fulfilled, finish. Now you cannot attract another male from the cosmos, from this earthly life. And then you become loner. Then you ask about interdependency. Your masculine and the feminine side is interdependent, it's complete, finish, you will have to die alone. But is that a wrong thing? Then you have to learn to live alone. No, but if a person is satisfied living like that, and Nobody can be satisfied, this is the wrong notion. You can never be satisfied living alone. So then how to change that? Then? Be a female. But is it does show More, that more you're- feminine energy. Yes. But how do you bring more feminine energy when You you're have so to- used to living on your own, doing things on your own? Yeah, you have to watch Class by Name, Understanding Female for this. Okay. Okay, and then you listen. You have to understand very finely. Whenever a man attains, you can say, becomes a Buddha or becomes a person with wisdom or becomes a rishi or a muni, he is in the female body, but he becomes a female. He learns surrender. He learns acceptance. He bows down to the Almighty in everyone. The male has to become a female in the mind, in the emotions, and then only he can achieve. How would you do that? By forgiving, by forgetting, by letting go, Yes. by not competing, Yes. by being easy, by surrender, by acceptance. You're doing all this. No, you are not doing all this. If you are doing all this, you will attract a dhasu male in your life. So is it If you are a good bitch, you get a fantastic dog to bark by your side. If you, that is the truth. So feminine energy is forgiving. That is feminine energy. But the male, now take the other side. If the male does the same thing, he doesn't bark, he doesn't shout, his wife runs to someone else. That is the truth. She wants a dog who can literally crush her. That is the feminine energy. That is the truth of life. They run to someone else. That is extramarital affairs. That is alpha male, alpha. Every female wants an alpha male. That is why they love alphas. So what are the qualities of That is why Casanovas are born. That is what Casanovas are all about. They are alpha. So what are the qualities of alpha man? If we can Alpha is male. Very balanced, I guess. They are there are four phases: male, 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 male,
that is a crazy male, a madman. There is a male, female. 25% of femininity in him. That is the alpha one. 25% femininity, 75% male. Male. He will bark, but he will know how to bark, when to show ego, when to be at ego. And alpha female? Alpha female, 75% of female. female and then 25%. Yes. Now if you are 100% feminine, you will attract a 100% masculine guy who will literally beat you every day. That is why women get beating. Because you are attracting the same passionate energy from the other person, from the cosmos, to fulfill the void created in you. But what is the feminine energy? Exactly. Accepting, forgiving, Yeah. letting go. What else? Just being. That is what a sadhu learns and becomes a sant. To just be. That is what a mother is all about. Love. तो एक क्वेश्चन क्योंकि मेरे ते बहुत ज़्यादा हो कर हाँ जी. ते तुसी कितना like you know पहला मैं before this happened to me the COVID stuff I was controlled in everything you know like a man you know so I couldn't keep any man in my life. That is why no boyfriend. No boyfriend, yes. But there is Now there is boyfriend. There is attraction. Now there gidda for sure, paiye. But Really? Seriously? यही तो गल है असली सीक्रेट. नहीं यार मुझे भी बताओ. पर ਮੈਨੂੰ secret COVID killed the male inside you. ਫਿਰ ਜਦੋਂ You- ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਥਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਈ ਡੋਨਟ Once, ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ once you witnessed death, the iron head inside your mind that got crushed, that got broken, and you saw death. You have to practice death every day. You have to think about death, that anything can be finished. So you will lose your firmness and you will become flexible. Women are flexible. That is the beauty of being a female. This flexibility came in you now. Maybe now you have learned to let go a lot of things. So automatically cosmos has given you a boyfriend. Automatically. But I have a question about that too. So, say, like, you know, boyfriend we have, but you know, like, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, like, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ receiving person ਨਹੀਂ, like, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ receive ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, money receive ਕਰਨੀ, like, ਕਈ ਵਾਰ, like, you know, this person spend a lot of money to me and give it to me just to go and use it, like, stone, stuff like that. What do you do about with that money? ਪਹਿਲੇ You have extra? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਲਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਗਿਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ You see, the female has to learn to take and the male means you have to learn to give. If you want to increase your maleness, the masculinity, start giving. Give, keep giving more. If you are the female, stop giving. Start accepting. so like ਫਿਰ you know like Once the mother starts giving something to the child, the male child, usually the female girl, she becomes masculine. Sorry, say it again. Repeat that, please. If you start giving, you become masculine. You develop masculine energy more. If for example you are a female, I am going to give you some money. Even to your You son? anybody, you cannot say no. As soon as you say no, you are a male now. You have to accept. Even if you're keep giving it to your son. Why do you give? If you give him with the feeling, yes, नहीं. take my son. If you are just nursing him, enough. But if you start giving, that is why in our Sanatan system, women don't give gifts. They exchange gifts. Male gives gifts. Nowadays, if you go to a restaurant at the dinner table and if two females have to pay money, they will eat each other's head. The male will just say, "Oh, आज पाई देगा तेरा पैसे यार की गल कर दिया तू खत्म हो गई गल."
The female doesn't have to give, she has to keep, she has to nurture. That is why the male organ gives semen, the female organ keeps it. And that is how manifestation happens. We all are born. Femininity means keeping. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਾਈਕ we never taken anything from like our family members like cousins uncles nothing like that so we used to give You became male, no boyfriend, that is why. No, it's like Sikhism principle, like when we grow up in our culture, we give, giving just stuck in head. Seva, Seva. not things. Okay. Not things. That is what people have ultimately changed it to an easier form. Yeah. So Don't talk about Krishna's teachings, keep a Gita at home. Simplified. You have to do seva, that is what it is. okay ਜੋ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਲਾਈਕ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਦਵਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੈਕ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੋ। ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਸੁੱਟੋ ਨਾ, ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਏ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਐ ਸਮਝ ਆਇਆ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ। If you don't want to keep something, give it. Don't feel guilt. Now what the mind will say, I should give back to the person who gave me. Why should I give him? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ। Men love to give. You don't even know. Let him feel like a male. He will make you feel like a female. no, she gave something, then she returned him second time. She comes, she said, here's your rings. I don't care. No. After 4 or 5 times he will stop giving. Trust me. If God, see, if I come to your house, I give you something, I give one gift, and you say, wow, maza aa gaya, this is what I wanted. Next time I'll come and bring 2 of them. Third time I will again give. Fourth time I might give you much more, and then happiness. If in the second situation, if I give you something and you say, maybe second or third time if I see the same reaction, I'll stop giving. So what God is giving, always welcome. He will stop giving after a few years. And we say, no, I don't want this, I don't need this. Let God decide, let time decide. He will continuously keep giving. You breathing, how you are breathing? You are being breathed. God is taking care of the breath. Next one, giving. You don't want to accept this, die, finish. So whatever God is giving, accept. God has chosen that boyfriend for you. Keep taking. And if you really can give, take all that, go to a Gurdwara and give. Do, karke dikhao. What you want to do, what your pride, what your ego is doing, doesn't want to let him know that you have given it to the Gurdwara. You want to let him know, I am giving back. Let him enjoy the art of accepting, the art of giving. This is an amazing feeling. He brought a lot of silver stuff like that. You wouldn't believe me. And my sister, she'd pack everything, got to the bank locker, he put everything there like big bricks for me. I'm not joking. And what we did, put it all back. Go there. You're so lucky. It's okay. What is the locker number? What is the? Let me know. The coins, I just like, I don't want to take it. You have a greedy person here. Don't worry, I'll consume all. But if you go on dates in Toronto, then if you're not paying on your first date, then you're not going on a second date. Is This it? Now it's Really? Yeah, That's what it's the trend is now? that is like you're sharing every time. Oh. Like if I would like let the guy to pay definitely, but ऐसा होता नहीं है. It's usually you are paying or sharing every time you're going on a date, even you are going on a. If you will be literally full with the female or the feminine energy, you will automatically get a male who will never let you pay anything. So चुपचाप मतलब खड़े रहो side में. No, you can shout, you can giggle, you can be chirpy, you can be kiddish, you have to be feminine. Otherwise,
If you don't like this, go to a river, jump, don't swim, die, take next birth. Before dying, ask me how to get a male body in the next birth. I'll teach you, and then die. They say if And then learn the complications of the male body, the male life. नहीं but ऐसे अगर normal situations में जाया जाए date में and somebody like the guys like you finish your food and everything अब वो क्या है, आपके male साथ वैसा बिहेव करेगा जैसे आपके अंदर की फीमेल है. अगर वो अंदर की फीमेल राजी है उससे खर्चा लेने को, खुश है, शांत है, वो फेमिनिन एनर्जी एक्सप्लोड करेगी, अंदर से फेंक के मारेगी उसमें. वो अपने आप मेल बनेगा. साला यार मजा आ गया आज इसके लिए खर्चा करके. नहीं वो if they love you they would open up their pockets. nobody loves on dates. They would ओ लव एट फर्स्ट साइट कराओ ना. like you they would open up their pockets for you. एक क्लास देखना उड्रू उड्रू, उसमें मैंने बता रखा है लड़के कैसे पटाए जाते हैं. ठीक है हाँ. और 2 घंटे की पूरी देखना है, वेरी हैवी क्लास, क्योंकि पूरी देखने के बाद अंत आने पे आप कहोगे ये सब बेकार की चीज है. ये उड्रू उड्रू. जैसे मैंने जहाँ पे स्कूल फिनिश किया था तो जो लड़के नहीं होते थे कई बंदे भी तो फिनिश किए होंगे लाइक सभी असाइनमेंट करते थे वो आपके. पे कर देते थे हाँ तो होता है. देखो कितना प्यार पाया जिंदगी में. गुरु गुरु ढूंढ रही है, गुरु 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 मिल गया. Just call me. ये एक्चुअली होता है. ये होता है. आपके अंदर की फेमिनिटी चाहिए आपको. आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको कुचल देगा, नो डाउट, but sometimes you don't लेकिन आपको दुनिया से प्रोटेक्ट करके चलेगा. no the first day we don't want them to think कि okay you are in this for their money and all that. Maybe ये भी तो होता है ना. आपको खुद पे काम करना है, वो अपने आप होगा. अच्छा नहीं मैं I mean I'm just आपको खुद पे काम. देखो मैं आपको फैक्ट बताऊं क्यों गड़बड़ होती है फर्स्ट डेट्स. लड़की ना लड़की बन के नहीं जाना चाहती, वो सुंदर बन के जाना चाहती है. तो वो बॉडी को सजाती है और लड़के की बॉडी से बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है. अंदर का मेल फीमेल मिलता ही नहीं. लड़की है काफी है, लड़की तो है, और कितनी लड़की बनेगी, उसे और सुंदर बनना है. कोई बात नहीं, आप लिपस्टिक लगा सकते हो, पर उसे बाल रंगने, उसे नौटंकी करनी. उस दिन तो उसने फेसबुक की क्या कहे बस कैटरीना कैफ बन के जाना होता है. फिर क्यों गई है उसके पास, उसे इंप्रेस करने गई है. वो आकर्षित हो जाता है उससे, वो कहता है चलें. वो आकर्षण हो जाता है. आकर्षण, आप बॉडी का आकर्षण करा रहे हो, आप प्रेम तो जानते ही नहीं करना. सारी लड़कियां तो आकर्षक बनने में लगी हुई हैं. तुम लड़की हो, तुम सुंदर हो, ऑलरेडी सुंदर, और कितनी सुंदर बनोगी. एक लड़के ने एक लड़की से प्यार किया, बहुत सुंदर, बहुत परी जैसी दिखती है. शादी के 15 दिन के बाद वो परी गायब. फिर वो कहता है परी कहां गई मेरी. सुबह सुबह शक्ल देखनी पड़ती हाँ, फिर वो परी गायब. है ना मेकअप के. अब वो, ये फैक्ट है, उसकी बॉडी की मेमोरी में वो ही लड़की है, ये दूसरी आ गई. प्यार खत्म हो जाता है, फिर वो बाहर जाता है. उसको पहले दिन से प्रोजेक्शन क्यों देते हो. सत्य पे चलो, बी ट्रूफुल, सच पे चलो, फर्स्ट क्लास चलेगा. व्हाई डोंट यू डू दैट. आपने भी वीडियोस में बोला है आपने कि as long as your husband does 20% to you should be happy. यस, Yeah, 20% is enough in the relationship. एनफ. 20 कहो 25 कहो एनफ है, हाँ, बिल्कुल. क्योंकि वो इमीडिएटली 50 के ऊपर चला जाता है और वाला चेंज हो जाता है. आपने वाला क्लास देखी होगी. हाँ. वाला मत बदलो, थोड़ा थोड़ा ही करो. अष्टांग मार्ग है, बुद्ध का अष्टांग योग है, उसमें यही फिलॉसफी है. सम्यक आहार, सम्यक, मैं ऐड कर रहा हूं इसमें मैं शब्द के साथ, सम्यक प्रेम. थोड़ा ही प्यार करो. वो बच्चे को पकड़ा, चूम चूम के गर्दन घोट डाली उसकी. नो, वो प्यार नहीं है. थोड़ा सा प्यार करो, बच्चा आपके पास दौड़ा चला आएगा. हस्बैंड लड़की का पति नहीं होता, बड़ा बेटा होता है. ये भी हुआ है. और लड़की हस्बैंड की बीवी नहीं होती, बिटिया होती है. अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई तो हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे ही नहीं. माफ तो यूं करते हैं हम अपने बच्चों को, हस्बैंड वाइफ को नहीं करते. काश कि आप मिले होते मुझे 15 years ago. हैं तो निकाह हो जाता हमारा. नहीं I mean, ओके ओके कैंसिल. मेरे पास अपने माता पिता हैं वैसे, एक यहाँ गोद लिए हुए मैंने माँ बाप यहाँ. मेरी लाइफ मतलब you know, तो कोई नहीं, एक बहू यहीं छोड़ जाते हैं हम. लो जी पापा, हो गया काम. 15 साल पहले घर पंगा डाल दिया, लेकिन क्लॉज देखो इनका लाइफ के अंदर. हाँ जी बोलिए बोलिए, गो अहेड. So just to touch back on the last point, let's say you pre-live, okay? If you catch yourself, because you know, like, typically when I watch that class, it's attention, where your attention is. So you catch yourself, boom, I'm pre-living. Right when you catch yourself pre-living, it comes back? Yeah, it does come back. Okay.
It comes back then and there only. Now the ghoda, the feet of the ghoda, the horse, the munna is waiting. Are you feeling proud about it? Do you feel ego? Do you feel wow? What if you feel ego but then you catch Immediately भाग जाएगा दोबारा. But what if, okay, let's say you feel ego. Uh, Right in that moment. It will come back again. Feeling ego. It will come back again. You should practice. Yes, that is what practice all. You can swim easily in first or second, third attempt, but to be a good swimmer, you have to practice. So practice this. It is practice. You can sharpen a knife by regularly working on it. So it is not like that one or two episodes you are That's able to. what my one question was, like, you know, sometimes you watch the classes, right, and you want to put it into practice, and then that was my question, like, sometimes you do catch yourself, you know, like putting emotion, overthinking, being like, you know, and then you catch, oh, I'm overthinking right now, I'm doing this. Then you catch yourself, it comes back. Yeah, it comes back. It comes back. But there is a contradiction, like on all the manifestation stuffs you watch, they say put emotion into that one. But we are saying it's like pre-living, emotion is pre-living? No, emotion is not pre-living. You start feeling and going beyond. How do you feel if you have a Tesla in front of a house? You feel normal. But you don't have, but you want to manifest it. Now what do you feel? You go crazy, you go bonkers. So that is obviously pre-living. You are going beyond. Whatever you have, you don't have to be happy or unhappy about it. We always long for girlfriend or boyfriend. Do we long for wife? No. Do we long for husband? No. So what you have it. Okay, that is the feeling. If you know how to feel that, boom, you can manifest everything, anything. ठीक है जी. So हाँ जी, okay, last one. भैया आपने बोला सम्यक आहार क्या होता है? सम्यक आहार होता है थोड़ा खाना. Not a meat or नहीं नहीं, मीट वीट खाओ, पर थोड़ा खाओ. थोड़ा कितना खाओ कि पेट भर गया, नीयत भर गई. नहीं, नीयत थोड़ी सी रखनी है, छोड़ना. अगर आप ये सीख लेते हो, फीमेल्स को इसके लिए तो तैयार करते थे. इतने सारे व्रत क्यों फीमेल्स के? देखो, धर्म के नाम पे डाल रखा है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में, कि ना इसको थोड़ा भूखा रखने की प्रैक्टिस करा दो, तो इसको ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कम में भी जी लेंगे. वो लड़ेगी ही नहीं. घर में कमियां भी आ जाती हैं. पति में कमी होती है सबसे पहले, तो उस राक्षस में ही कमी है. अगर कोई लड़का बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसकी माँ ने उस पर बहुत मेहनत की है. आदमी जंगली होता है. पुरुष, नर, मैस्कुलिनिटी जंगली ही होता है. आप छोटे लड़के को देखना, बिठाओ, यूं फुदकेगा, इधर हाथ मारेगा, कुछ तोड़ेगा. लड़की को बिठाओ, बैठ जाओ बेटा, वो बैठ जाएगी चुपचाप. नेचर ने बनाया. उसके एक्स पूरे हैं, मेल का एक वाई एक्स्ट्रा है. वो कह रहा है कुछ पंगा है, आई एम इनकम्प्लीट, फुदको. तभी तो वो मकान बनाते हैं. 1 मकान, 2 मकान, 400 मकान, दुनिया जीत लेंगे, नेपोलियन बन जाएंगे. उसका खत्म ही नहीं होता, उसे चैन ही नहीं पड़ता. और फीमेल को क्या है, एक बेबी बना दिया, सब कुछ बना दिया. अब फीमेल भी मेल बनने लगी है, और वो बन सकती नहीं. इसलिए सब दुखी हैं कि यार मेरे जीवन का क्या होगा, लोनलीनेस है इतनी ज्यादा, मैं परेशान हूं. बेचारी बन जाती हैं, पर क्या करें, अकेले रोना पड़ता है. हाँ जी. ਸੌਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ किस तरह किया जाए, नो थोड़ी सी. दिमाग में जो नेगेटिव थॉट आता है ना, वो आपका नहीं आता, वो मुन्ना कार देता है. आप सारे टाइम मुन्ना के साथ रहो ना, मन को ऑन करके रखो मुन्ना को. अच्छा मुन्ना अब ये सोच रहा है तू, अच्छा मुन्ना वो सोच रहा है तू, कुछ नहीं होगा. डेड, बिल्कुल डेड. छोटे बच्चे को देखना, वो घर बैठा ना कुछ कर रहा है, इससे खेल रहा है और कर रहा है गबल गबल. अचानक देखता कोई देख रहा है, वो ऐसे हो जाता है. फिर कर रहा है. जब तक उसे पता है मुझे कोई देख रहा है, वो तमीज से रहता है. उसको पता लगे, भाग गए, उठा के तोड़ फोड़, आग लगाओ, नाचो कूदो, पागल कर दो. दिस इज मुन्ना, दिस इज माइंड, दिस इज फोटोन, दिस इज प्रोटॉन. टिल द टाइम यू ऑब्जर्व इट, इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन. तमीज से चलता है. जितने लोगों ने लाइफ में मैनिफेस्टेशन की है, वो स्ट्रेट लाइन में चले. एक ही चीज सोचिए, वही सोचिए, और सिर्फ वही सोचिए, और खत्म. अर्जुन तू यही सोच, यही कर, और कुछ नहीं कर. सारी ऊर्जा वहीं लगा दी.
और ये तब होता है जब आपको सरेंडर करना आता हो। आप किसके आगे सरेंडर करते हो? ओ मैं तो, मेरी तो बात ही अलग, मैं तो पहले ही ताड़ के पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं। तो इस सरेंडर करके देखो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। पता नहीं कब से आपने सरेंडर करना शुरू किया, याद है? अभी किया है जैसे बीमार मीटिंग बंद किया है और ओटवा में आके आप दोनों ने किया था उस दिन सरेंडर, याद है? मुझे अभी भी याद है, घर पे, याद है ना? तब से सोचो अब तब के बाद क्या क्या बदला है, सोच लेना, ऐसे ही सोच लेना, सोचने में क्या है। भैया like just want to share with you, she took a THC candy, तो इसको थाट नहीं आ रहे थे, then she start crying. गुड है, रोना बहुत अच्छी चीज है, वन मस्ट क्राई, आंसू निकालना बहुत सुंदर। सॉरी Yeah, गाइस I heard that. THC. सर कभी कभी ना जैसे यंग है हम, तो अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो लाइफ में प्री लिविंग, आपका भी बात आया था दिमाग में कि भाई प्री लिविंग मत करो, कोई गोल सेट हो, जैसे कोई आप रखे, जैसे हम गाइडेंस दे रहे हैं चीज की, तो बोलते हैं यार ये करेंगे, फिर यार नहीं यार प्री लिविंग नहीं करेंगे, मतलब गोल सेट उसमें कंफ्यूज हो जाती है। गोल सेटिंग और प्री लिविंग में थोड़ा कंफ्यूज। जब भी आप लाइफ में फ्यूचर में जा रहे हो, मुन्ना ऑन है। ओके, जब भी पास्ट में जा रहे हो, मुन्ना ऑन है। मुन्ना चला रहा है गाड़ी आपकी, आपको चलानी है। भविष्य शब्द का अर्थ ही है मुन्ना, पास्ट शब्द का अर्थ ही है मुन्ना। मुन्ना बस आगे पीछे भागता है, वो अभी में नहीं रहता। तो छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो हो तो रहा है, इतना कुछ हो तो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है ना, तो मौज ज्यादा अच्छी है ना, ये ज्यादा अच्छी है ना, तो रहो ना। वाला पता तो चल गया, ऐसे वाला बन के मौज करिए, पता चल गया ना। हाँ जी, जी रजित जी, वो अगर प्री लिविंग भी कर ली है, अभी समझ में आ रहा है कि प्री लिविंग कर ली है, उसको कैंसिल कैसे करना है? वो अभी बात हमारी स्टार्टिंग में हुई है इस क्लास में, कि उस थॉट के ऊपर जाके बस उसको ऑब्जर्व करो, अच्छा है प्रीलीव कर लिया, खत्म, फिनिश। बहुत ज्यादा सिंपल है, जिंदगी बहुत सिंपल है। मुन्ना कहता नहीं कुछ करके होगा। अगर तुम्हें ये एडिक्शन हो, ये इसकी हो जाए, ये यूट्यूब की और ये ऑल दिस सोशल मीडिया की, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं, उसको कैसे, मैं आई एम सो लाइक फ्रस्ट्रेटेड, मैं तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या चीज की एडिक्शन है? मेरी यूट्यूब की बहुत जबरदस्त। यूट्यूब देखते रहना। हाँ, हाँ तो देखो क्या हो गया, खत्म कोई बात नहीं। ना, कोई बात नहीं। ये एक्सेप्ट करो पहले इसको। यू आर फाइटिंग, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो। नो 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 नो, मुन्ना पावर पकड़ रहा है, अगले दिन 1 घंटा और दिखाएगा। सिगरेट छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, छोड़नी है, नहीं छोड़नी है यार, प्यार करना है। देखो, आप बीवी से बहुत प्यार करो, आप पे शक करेगी। ठीक हो गया, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, ठीक है ना। उसे बोलो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ती नहीं है। बीवी को बोलता है ना हस्बैंड छोड़ दे, फिर ना छोड़ती नहीं है। अगर उसे बोले ना नहीं मुझे मत छोड़ना, वो कहती है मैं जा रही हूं घर छोड़ के। ये उल्टा काम, ये मुन्ना उल्टा करता है हमेशा। तो एक्सेप्ट कर लो। बच्चा कह रहा है ना मैं आग लगा दूंगा, अच्छा लगा दे बेटा, बैठे हैं हम, साइड से लगाइए, उधर से हमें बचा लियो, फिर नहीं लगाएगा। तो एक्सेप्ट करके धीरे मतलब कम देखना चाहती हूँ मैं, बहुत अब अच्छी देखती हूँ वीडियोस, बट एक्सेप्ट करना मींस खत्म। क्लास देखिए, एक्सेप्टेंस वर्सेस एडजस्टमेंट, फिर वही लड़ाई। एक्सेप्ट फिनिश ना, हाँ हाँ ओके, से यस टू लाइफ। जो चीज आपने एक्सेप्ट कर ली ना, मुन्ना उसे चेंज कर देता है। So प्री लिविंग में हम कह रहे हो जैसे टेस्ला का एग्जांपल है, तो हम जो सोचना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दे कि वो हम लिव कर रहे हैं उसके साथ। किन चक्रों में लगे हुए हो? प्री लिविंग क्लास देखना, सुख मांगो, शांति मांगो, प्रेम मांगो, एनर्जी लो। एनर्जी, एनर्जी को मैटर में कभी भी चेंज कर सकते हो। क्या चीजियां खरीदने में लगे हुए हो? क्या होगा मैटर से? ये मैटर है, ये बॉडी है। बहुत बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां धक्के खा रही हैं, बड़ी अजीब अजीब सी, जिसे लड़कियां खुद कहती हैं तो बंदरिया लगती है, और राज कर रही है। तो बॉडी का अचार डालोगे, एनर्जी को प्रेम करते हैं। इट इज द एनर्जी। आप फीमेल हैं, आप अंदर से देवी हैं या चुड़ैल हैं, कौन जानता है? मैं पुरुष के तौर हूं, मैं अंदर से राक्षस हूं, कमीना हूं, कौन जानता है? बाहर की बॉडी को मत देखो, लुक्स आर डिसेप्टिव, डोंट थिंक अबाउट इट। तो ये जो मैं देखती हूँ, मैं जो सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि जो मैं यूट्यूब देखती हूँ, आई वॉच इट सो मच ऑफ डिफरेंट वीडियोस, तो सारी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में जा रही है, तो धीरे धीरे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अनकॉन्शियस में चला जाता है। लाइक इफ यू कीप ऑन, मरने दो, होने दो, हिप्नोसिस हो जाएगा, और क्या होगा? मुन्ना थोड़े दिन के हिप्नोसिस बाद वो भी तोड़ देता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो तुम्हारा धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम में ये कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा, बिकॉज कॉन्शियसली यू डोंट वांट टू डू इट। ये सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और इसे अनकॉन्शियस ठीक करेगा। देखिए का अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्लासेस। हाँ तो स्टॉप थिंकिंग कॉन्शियसली, ओनली देन अनकॉन्शियस विल डू। दादाजी, हाँ दादाजी, हाँ तो दादाजी यहाँ से छोड़ो, छोड़ो, छोड़ा? अभी तक तो छोड़ा नहीं, इसलिए एक्सेप्ट करना है।
एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। इस जन्म में नहीं मिल पाए हम 15 साल पहले, आगे देख लेंगे। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। डिफरेंट होती है आपके जो मेरे और राखी बांध देनी थी, बहन बन जाना था मुझे, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी विद दैट। ऑलरेडी बहुत भाई बहन बन जाते हैं हम, नो आपकी प्रॉब्लम। बहुत बहनें हैं ऑलरेडी। ओ कोई गल नहीं। आपकी बहुत है। उनका लास्ट क्वेश्चन है जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन फिर। हाँ जी, आप जनरली कैसे होता है कि आप एक अपने लाइफ में एक एनर्जी लेवल और एक एनर्जी लेवल पे ऑपरेट करते हो आप, हाँ जी, चाहे आपके आप जॉब में करते हो, आपके फैमिली लाइफ में करते हो, आप कोई स्पोर्ट्स प्ले करते हो, आप एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ऑपरेट करते हो। सडनली क्या होता है कि यू रियलाइज दैट कि एट सम पॉइंट कि यू कुड एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन, बेसिकली आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो। तो अगर कोई इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर ऑपरेट कर रहा है और उसे अगर ऐसा लगता है कि यार आई थिंक आई कैन डू मोर, ये नहीं कि आप ज़्यादा पैसे के लिए कर रहे हो, बट जनरली कैन यू 10x every area, every aspect, every corner of your life? यस Is something in our hands to do it? Yes, it is in our hands. Again, and that life नहीं नहीं, हमारे हाथ में, अब 10 गुना क्या 1000 गुना बढ़ा लो, डालना चाहता हूँ ऐसी क्वेश्चन पे फॉलो अप। 1000 गुना बढ़ सकती है चीज आपकी, एंडलेस। आपके सुख दुख मुन्ना वैसे देगा। आपका एक्सीडेंट लिखा है अगर मुन्ना ने, तो वो आपकी मारुति से देगा या आपकी मर्सिडीज से देगा, एक्सीडेंट वो देगा। आप मारुति के बजाय मर्सिडीज बना लो, दैट्स गुड, वो बन जाता है। ठीक है सर, एक है कि आप जब नेक्स्ट लेवल पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगर सेल्स मैनेजर है, कोई अगर 10 कॉल करता है क्लाइंट को, कल को वो अगर बोले नहीं यार मैं 100 कॉल करूंगा, ज्यादा मेहनत करेगा तो मारा जाएगा। मेहनत नहीं करनी, करना नहीं ना। मेहनत नहीं करनी। तो वो एनर्जी आउटपुट, तो पॉइंट क्या हो गया? आपने ऐसे कहा कि आप कर सकते हैं, आप 1000 टाइम्स भी कर सकते हैं। हाँ, 1000 टाइम्स उसका रिजल्ट पा सकते हैं। जितना अमीर बनना है उतना ज्यादा कम काम करना है, फिजिकली माइंड से करना है। सब अमीर माइंड से करते हैं, फिजिकली कहाँ टाइम है। आजकल फिजिकल वैसे भी ज्यादा कुछ काम होता है, नॉट माइंड गेम एनीवे। हाँ, तो माइंड तो इधर उधर भागता रहता है, कीचड़ करता रहता है। कमिंग बैक टू हाँ जी, आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज कि बेसिकली अगर मैं अपना 100% डाल दूं, उससे ऊपर नहीं डाल सकते, नहीं उससे ऊपर डालना भी नहीं है, डाल ही नहीं सकते। मुझे कैसे पता है कि 100% डाल रहे हो आप? जो डाला वो 100 ही है। तो बॉटम लाइन ये है कि उस 100% का रिजल्ट 100% कैसे, एटलीस्ट 100% या 1000% कैसे मिले? उसका रिजल्ट डिसाइड क्यों कर रहे हो आप? इसीलिए तो नहीं मिल रहा। वो भगवान को कृष्ण ने कहा है मैं करूंगा डिसाइड। कितने चक्रों में पड़ा है यार। तो मैं तो कर्म करने को रेडी हूँ 1000%। कर्म नहीं करने देना। अर्जुन को मना किया, थोड़ा सा कर, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं करना। मैं नमक डालने को तैयार हूं और नमकीन बनाऊंगा, वो आग लग जाएगी, सड़ जाएगा। मैं और चीनी डालूंगा, वो कड़वा हो जाएगा। सम्यक, सम्यक मीन्स एप्ट। एज मच रिक्वायर्ड खाओ, एज मच रिक्वायर्ड खेलो, एज मच जो जरूरत का है। वांट तो एंडलेस है, कितना सांस लोगे, एक्स्ट्रा कहां लोगे, उतना ही निकल जाएगा। वाई वेस्ट, खत्म। इजी रहो। मस्ती कब करोगे, एंजॉय कब करोगे लाइफ। एंजॉय करो, रोज पूछो खुद से, एंजॉय किया? 3 घंटा 20 मिनट एंजॉयमेंट के होते हैं रोज के। हाँ जी, इसी पे फॉलो अप ये कि प्रोक्रास्टिनेशन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। फैंटास्टिक। आलसी बने रहो, ठीक है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि गुड और बैड। मैं बताता हूं, आलसी बने रहो। नीचे के 3 चक्र के लिए, हमारे नीचे के 3 चक्र अलग हैं। भोजन है, मलमूत्र त्याग है, और अपना शरीर के लिए जो बनाना है, इंद्रियां हैं। और यहाँ के चक्र के लिए कुछ नहीं करना सीखो, कुछ नहीं करना। यहाँ के चक्र के लिए ईश्वर करता है, उसे करने दो, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। यहाँ के चक्र के लिए सब कुछ करो। नीचे के 3 चक्र, खूब कर्म करो। कर्म करना भी है और कर्म नहीं भी करना है, ये दोनों लफड़े खत्म, ठीक है। रोटी के लिए कर्म करो, लालच के लिए करोगे मारे जाओगे, फिर ईश्वर का खाक काम करेगा। जब आनंद में रहना है। आनंद कहां से आता है? जब आपको आनंद आता है, क्या होता है? आपका पेट नाचता है, ये नाचता है। हाँ, क्या करना है उस टाइम? कुछ नहीं करना है। सोता कौन है? ये सोता है, ये सोता है ऐसे। क्या करते हो इसके लिए? कुछ करते हो? क्या करते हो आप सोने के लिए? कर ही नहीं सकते। ऊपर के चक्र के लिए कुछ नहीं करना, कृष्ण करा देगा। और नीचे के चक्र के लिए कर्म कर। अर्जुन तू बस बाण चला, तू रोटी खा, ये अपने आप पचा लेगा, मेरा काम है। तो कर्म करना नहीं छोड़ना है। कितना करना है? जिस कर्म को करने से हम रिजल्ट के बारे में कल्पना ना करने लगे। कर हम रिजल्ट के ले रहे हैं,
कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ऊपर के चक्र को करने दो। यहां कुछ नहीं करना सीखना है, यहां पता नहीं होता है कैसे होगा, क्या होगा। क वर्ड सारे के सारे मूलाधार के हैं, रूट चक्र से निकलता क वर्ड। क्यों, कैसे, कहां, कब, ये वर्ड्स के लिए हर समय आंसर है, पता नहीं। आप यहां आ गए, थर्ड आई पे आ गए, गॉड विल डू, गॉड हैज टेकन ओवर द चैरियट। फिट काम होता है। एनी हाउ जी, एम्पल टाइम जी, लॉट ऑफ टाइम गिवन बाय यू ऑल, लवली सेशन। हाँ, आपने खाना भी तो खिलाना भी। सेल्फ इनवाइटेड यार, मैं तो कल का प्रोग्राम बना लगी थी। तो 2 दिन खा लेंगे हमें क्या, आपका फालतू पैसे तो ठीक है। एनीहाउ, थैंक्स फॉर दिस सेशन, लवली गैदरिंग, ग्रेटिट्यूड टू ऑल, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।